अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। सुस्वागतम् सुस्वागतम्। विश्व में शांति लाएंगे, हर मुश्किल को हराएंगे। विश्व में शांति लाएंगे, हर मुश्किल को हराएंगे। अब होगा विश्व खुशहाल, होगा विश्व खुशहाल, हमारा होगा विश्व खुशहाल। G20 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 G20। सरहद सीमा ना रही कोई, हर राष्ट्र हुआ एक सूत्र में, हर राष्ट्र हुआ एक सूत्र में। सब मिलकर जश्न मनाएंगे, हर देश को स्वस्थ बनाएंगे, हर देश को स्वस्थ बनाएंगे। अर्थव्यवस्था भी सुधरे, स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधरे। अब होगा विश्व खुशहाल, होगा विश्व खुशहाल, हमारा होगा विश्व खुशहाल। G20 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 G20। हम सब मिल हाथ उठाएंगे और दिल से फर्ज निभाएंगे, आगे ही कदम बढ़ाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अमन शांति और भाईचारा, ऐसा है संदेश हमारा। अब होगा विश्व खुशहाल, होगा विश्व खुशहाल, हमारा होगा विश्व खुशहाल। G20 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 G20। सरहद सीमा ना रही कोई, हर राष्ट्र हुआ एक सूत्र में, हर राष्ट्र हुआ एक सूत्र में। सब मिलकर जश्न मनाएंगे, हर देश को स्वस्थ बनाएंगे, हर देश को स्वस्थ बनाएंगे। अर्थव्यवस्था भी सुधरे। On the outset, I feel it a great privilege to address you on this great occasion. Firstly, I welcome all the students who are acting as delegates and all teachers of AP Model School Madanapuram. As you know, Y20 and G20, you know, India is doing the presidency of G20 countries from December 1st, 2022 to 30th November 2023. Like a mock parliament, we are conducting a role model activity for our students, and the main theme of this Y20 Manthan is Vasudhaiva Kutumbam. That means one family, 1 year. So taken these opportunities, and all the delegates from
G20 countries will participate and discuss on 5 main themes. That is, one is future of work, and second one is peace building and reconciliation, and the third one climatic change and risk reduction of disaster management, and fourth one shared future, and last one, that is fifth one, health, well-being and sports. So all these 5 thematic are very much important for our youth. Our government all over India encouraging to facilitate this great event in schools, various schools and colleges. I hope the people who are engaging in this event will come out with flying colors, especially our AP Model School Madanapuram will come out with flying colors with the role plays of our beloved students. I am confident and I am sure that these children will act proudly and represent as modalities of G20. Thank you all. रंग बिरंगी अपनी टोली, रंग बिरंगी अपनी टोली सजकर बनती है रंगोली। रंग बिरंगी अपनी टोली सजकर बनती है रंगोली। अपने प्रेम की ज्योति से इंद्रधनुष बनाएंगे, इंद्रधनुष बनाएंगे। समानता और मानवता हमने माना और पाया। समानता और मानवता हमने माना और पाया। वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्।
threats to our planet, but also to our economies and our societies. We need to take urgent action to address these challenges, and we need to do it together. The G20 is a unique forum for the global cooperation, and we have a responsibility to use this forum to make a real difference. One of the key things we need to do is to change our lifestyles. We need to consume less, waste less, and live more sustainably. This will require a change in mindset, but it is essential if we want to protect our planet for future generations. There are a number of things that we can do to change our lifestyles for the better. We can walk, cycle, or take public transportation instead of driving. We can eat less meat and more plant-based food products. We can recycle and compost, and we can make small changes in our homes, such as energy efficient appliances and light bulbs. These are just a few examples of the things that we can do to change our lifestyles for the better. By making these things, we can make a real difference for the environment. I urge you all to join in me in taking action to change our lifestyles for the environment. Together, we can make a big difference. Over the next 2 days, we will discuss a wide range of issues including trade, investment, climate change and development. We will also work to develop a common agenda for action. I am confident that we can achieve great things together. We have the power to make a difference in lives of people around the world. I declare that G20 summit has begun. Karthik assumed by Alberto Fernandez, the President of Argentina, the second largest country in South America. We are स्वागत है अभिनंदन है देवभूमि में वंदन है स्वागत है अभिनंदन है देवभूमि में वंदन है विश्व अतिथि का अभिनंदन विश्व सोच का वंदन है स्वागत है अभिनंदन है देवभूमि में वंदन है कुटुंब एक भविष्य हो हमारा एक विश्व है एक कुटुंब एक भविष्य हो हमारा देवभूमि में हम करेंगे देवभूमि में हम करेंगे मंथन ये सारा स्वागत है अभिनंदन है देवभूमि में वंदन है Congratulate you, and this is the one best example, best model, and you all actively participated. Likewise, we'll introduce many things in future. सभी की सुन्नत हो आर्थिकी सभी की समृद्धि की कामना स्वागत है अभिनंदन है देवभूमि में वंदन है Welcome to India, welcome to
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।